absolutely believing in the science of Garb Sanskar. They both have combinedly written this book together, which is a complete guide, a comprehensive guide on Garb Sanskar, the practices, the techniques, very rightly named wow, because it brings that wow factor into your life. And it is wow because it is the womb, the world of the womb. How did this concept of basically the physical, mental, emotional, spiritual well being during the pregnancy journey, and of course, the concept of the book come around between the two of you? See, as you said, we have been practicing Garbh Sanskar since last 18 years with our patients, with our mothers at Pretty Mom. So initially came the first book, which is Spiritual Secrets of Pregnancy and Childbirth, written by Dr. Tushar, Right. where we gave the concept of Garbh Sanskar, where we gave them the concept of, say, doing all these Garbh Sanskar practices in pregnancy. But then the mothers started asking ki how do we do it? Like if we tell them ki okay, you should read these mantras, you should chant these mantras, you should be doing these coloring activities, drawing activities, painting activities, some intellectual activities. So they said, see, if you tell them you have to do it, probably they forget. At times True. it's like, okay, this is your homework, now you go and do that. So half of them were doing it, half of them were not doing it. So we thought we would combine all these things which we asked them to do in one book where they have everything to do. This is 260 pages of book, and we generally say the pregnancy is 260 days. So we've just each day you have Amazing. one page to cover on. Such a beautiful अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 260, 260 days of 360-degree coverage Yeah. of your pregnancy journey. Yes. it's just Beautiful. like people as Smita was saying कि people used to ask तो अगर in short कहूँ तो पहले लोग जानना आते थे कि हम क्या पढ़े तो मैंने पहली वाली पुस्तक ली थी अब वो उन्होंने पढ़ ली पढ़ के उन्हें पता लगा कि बहुत कुछ करने से बच्चे पे उसका असर पड़ता है तो फिर वो पूछने लगे अब हम क्या करें तो करेंगे Amazing. सो अगर सिंपली कहूँ तो पहली वाली पुस्तक जो थी वो तो लाइक जैसे हम जीपीएस पे कहीं जाना होता है तो वो मैप देख लेते हैं और ये उस मैप पे वॉक करने का तरीका है तो दिस इज द एक्चुअल क्या बात है व्हाट अ राइट वे ऑफ पुटिंग कि पहले आपने उनके लिए मैप बनाया फिर आपने उनको वो ड्राइव दी जिससे वो पॉइंट्स जा मार्क कर सके दिए दैट इज मेकिंग देयर लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल और इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे आप लोग And as WHO also says, health is about not mere state of well-being, it is emotional, physical, mental, and spiritual well-being. Absolutely. So if combined all these four aspects, four dimensions into this book, we've divided this book into four different parts, which is spiritual, emotional and mental, intellectual and physical. Excellent. So basically, this book is like a comprehensive platform of holistic health with modern concepts. Am I right, doctor? Yes. Beautiful. So in this book, what are the core principles of Garb Sanskar which you have used, emphasized, or the techniques or the practices which you are basically propagating here? So, as I told you, what we have been doing, probably we have incorporated everything, starting from, as you said, mantra chanting. So, what first mantra to be, say, when you get up in the morning, what is the first thing you do in the morning? Before getting up from your bed, on your bed, and then as you get up throughout the day, what different practices you need to follow on. So it's a complete thing which will give you each day of practice, which you can follow on, and then starting your day with the spiritual thing, then whenever you have time. And the best part is this book is for both. It is not a mother's book. Absolutely. It is a book for the couple. We are insisting it is the couple which is pregnant. Yes. And I hope you all get to see the first podcast with the doctors where they have emphasized the importance of fatherhood. Trust me, आपको ये उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद फादरहुड की जो नई डेफिनेशन और नई दुनिया दिखाई देगी. Trust me, we will have amazing fathers in this world. We promise you that. So we have actually coded the book. So the first coding तो ये है कि I think when you see the book, it has 5 colors of flowers. So those flowers, if you see the book, they have those 5 colors.
Okay. So the orange color, the yellow, the purple, the pink. So this coding is specifically done, the 5 sections. So the spiritual section is the yellow section. Then comes the emotional section, there's a pink section. Then comes the interaction section, there's a blue section. And the physical section, there's a purple section. And the last is the scar book or the yellow section. So this is a convenient coding Okay. for dividing the book. Another coding we've used is the pages, as you told you. The father is equally important, and I don't think that there are many books available which are for both the couple, both the partners, the male as well as the female. So most of them just focus on the women, while the father is the most important person. Right. So all the activities are duplicated, so that the father also has to participate in those activities. So we put a mustache for all the books, the pages that are meant for the father, and a bindi for all the pages that are meant for the mother. So Plus, we've kept the size also like that both of them can do it together. together. So, That's okay. our purpose. Like once you do it, so one page the father would be doing, the other page the mother would be doing. So they can do it together. And another interesting aspect Spending I'll tell you time about the together. book is that we are living in the dates of AI and all. So this book, whatever illustrations this book has, are all handmade illustrations, all hand painted, 100% of them. And incidentally, our artist Sachi was also expecting while actually she drew this. That is. So you can imagine the passion which is coming to this book and the love which is already there in this book. Amazing. So this is the technical part of creating the book. What are the core principles of Garvsanskar you're touching in this book? Okay, so the core principles which we are touching in this book is, as you were talking about, that we actually are aware of the mental, physical, and emotional aspects. Everybody acknowledges those aspects. We talk of EQ, IQ, all these things. We know about physical strength, body, and all. But we need to understand, as humans, we have to understand that everything, just like the earth revolves, so there is always an axis around which you revolve. A circle is drawn around a center. The center may not be seen always, but without a center, there cannot be a circle. True. In the same manner, the spirituality is the axis of our being. Life can revolve only if there is an axis. Very well. And if the axis is stable and not moving, then only movement can take place. Any movement in the world can take place only when there is something which doesn't move. And that something which doesn't move stays stable and strong. And many of times, hidden from our vision is actually the spiritual part of it. Absolutely. So, as people who, as humans, we need to understand the finer and the deeper aspects, the esoteric meanings of our existence. And that is why this book talks about, is a sort of a spiritual primer. It sensitizes you to the importance of all those activities. वो सब गतिविधियां जो पुराने समय में हमारे घर के बड़े लोग हमें बताते थे, वो सबका महत्व क्या है और वो कैसे होने वाले बच्चे पे और माँ पे एक अच्छा असर डाल सकते हैं. तो सब गतिविधियां कि अगर आप सुबह उठते ही कराल दिवस पे लक्ष्मी करवती सरस्वती करते हैं, आप महामृत्युंजय बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो वो उन सब का साइंस क्या है, उन सबको बोलने का आपको लाभ क्या होगा और वो सब कब कैसे बोलना है. तो कौन सा मंत्र आपको बिस्तर से उतरने से पहले बोल लेना है, कौन सा पहली बार आप कुत्ते बोलना है, कौन सा जमीन पर पाँव रखने से पहले बोलना है, कौन सा आपको खाना खाते हुए बोलना है. तो इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल प्राइमर भी है, क्योंकि नए लोग जो धर्म को समझना चाहते हैं और दैनंदिन रोज के दैनिक क्रियाकलापों को समझना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और आजकल तो मेरे लोगों में बहुत रुचि है इस चीज़ में, लेकिन वो फ्रॉम द सोर्स चाहते हैं चीज़ को. तो चूँकि सोर्स से चाहते हैं, इसलिए हमने उसको ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में, साथ में उसका मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में साथ में दिया है, क्योंकि हर प्रकार से एक वाइडर उसके साथ अपील के साथ में ये बुक सब लोगों को समझ में भी आ सके, पढ़ भी सके और वो उसका ज़्यादा से अधिक लाभ ले सकें स्वयं के लिए और बच्चे के लिए. तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं. चैंटिंग इज़ वन एक्टिविटी. तो हमने उसका सब जगह साइंटिफिक बेसिस भी दिया है, क्योंकि अब लोग वेस्ट में बहुत रिसर्च है जो बताती है कि चैंटिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, चैंटिंग आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखती है, एंग्जाइटी को कम करती है. एक साधारण माला फेरना जैसी भी एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ को मदद करती है. तो ये इतना हम लोग आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ. सबसे आसान तरीका है, अगर कोई माँ 5-10 मिनट भी रोज सुबह शाम 2 समय माला फेरेगी तो बच्चे पे भी अच्छा असर लाएगा, क्योंकि अच्छा हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है बॉडी में, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है वो बच्चे पे असर डालता है.
तो चैंटिंग जैसी एक्टिविटी है। फिर म्यूजिक, तो म्यूजिक का बहुत इसमें साइंस है कि कौन सा म्यूजिक किस दिन सुने, मंडे को कौन सा सुने, ट्यूसडे को कौन सा सुने, वेडनेसडे को कौन सा सुने, फिर कौन कौन से म्यूजिक का क्या क्या एस्पेक्ट है। सो फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता ही नहीं, जैसे जैसे अगर आपको पता हो तो पुराने समय में लोग कहते थे कि अपने घर में बाल कृष्ण का चित्र लगा के रखिए, जी क्योंकि भगवान कृष्ण का बाल रूप का चित्र अगर आप लगा के रखेंगे तो उसका बच्चे पर असर पड़ता है। और कितनी मदर्स हमारे पास आती है जो बताती है कि हमारे बच्चों के बाल कर्ली हैं क्योंकि हमने कर्ली हेयर वाले लॉर्ड कृष्णा का चित्र कमरे में लगा रखा था। तो या बालकांड सुनिए रामायण का। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी, उनका लाभ क्या है, उनको करने से क्या बेनिफिट दोनों को होगा, मदर बेबी ड्यू को, फादर को, और वो कैसे करनी, तो वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर अधिक से अधिक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। और जैसा आपको बताया कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, पूरे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड। और हर चीज का आपने साइंटिफिक वैलिडेशन दिया है बिल्कुल। सो दैट दे नो द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट, व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो पहले शुरू किया, जहाँ सेक्शन शुरू किया है उस सेक्शन की शुरुआत में पहले हमने साइंटिफिक एविडेंस दिया है, ताकि साइंटिफिक एविडेंस से लोग ये कन्विंस हो जाए कि जो चीज़ हमारी सभ्यता को, हमारी समझ को, कलेक्टिव समझ को, हमारे समाज को और हमारे कल्चर को पता थी, वो चीज़ का वेस्टर्न लोग यूटिलाइज करके बता रहे हैं हमको, अरे ये तो हमें पता था सही कि बात मेडिटेशन है। So गर्भ संस्कार in Western science is prenatal psychology. एब्सोल्युटली। So that's that. हाँ, उनका एक टर्म भी है इसके लिए, आजकल तो वहाँ बड़ा एक नया टर्म चला है, उसकी बहुत बात करते हैं लोग कि प्री नेटल साइकोलॉजी, अर्थात जो बच्चा बॉर्न होने वाला है उसका बॉर्न होने के पहले से साइकोलॉजी भी क्या क्या चीज से असर किया किया जा जा सकता है। सकता है। तो वो प्री नेटल साइकोलॉजी और कुछ नहीं है, वो गर्भ संस्कार का ही अंग्रेजी